Now we observe that the depression in freezing point we can observe in natural day lives, especially in the hill areas. That is, we can reduce the freezing temperature of the water by ethylene glycol and NaCl. Now if you look at the third application, that is the camphor. Generally the camphor, which contain the highest cryoscopic constant value, Kf value, it is 39.70 kelvins kilograms per mole. तो हम कैम्फर को ऐड करें तो टेम्परेचर को हम हाईएस्ट वैल्यू में चेंज कर सकते हैं. हम वी कैन रिड्यूस द टेम्परेचर. तो कैम्फर ऐड करने के बाद फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. सो विच रिड्यूसेस ए वेरी हायर वैल्यू, दैट इज 39.70 केल्विन्स. तो कैम्फर हम 1 किलो ऐड करें तो इफ़ यू ऐड 1 किलोग्राम ऑफ द कैम्फर, देन the freezing temperature which will be reduced by 39.70 kelvins. तो 1 किलो कैम्फर ऐड करें तो 39.70 केल्विन्स किलोग्राम्स पर मोल बोले तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 किलोग्राम कैम्फर ऐड करें तो 1000 ग्राम कैम्फर ऐड करें तो फ्रीजिंग टेम्परेचर 39.70 केल्विन्स कम हो जाता है. सो इसका वैल्यू, इसका मीनिंग वही है 39.70 kelvins kilograms per mole, which means 1 kilogram of camphor depresses the temperature, the freezing temperature by 39.70 kelvins. तो 1 किलोग्राम इतना टेम्परेचर को कम करता है. So generally the camphor which contain the highest cryoscopic constant, that is 39.70 kelvins kilograms per mole, is used in the roast method to calculate the gram molecular weight of the naphthalene. तो नाफ्थलीन बोले तो सब्लिमेशन कंपाउंड है, तो इसका सब्लिमेशन की वजह से इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को पता चलना थोड़ा मुश्किल है. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रीजिंग टेम्परेचर, द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग टेम्परेचर, so we commonly added the camphor in the roast method. So that is the third application. Now if you look at the fourth application, generally we are already said the table salt, the common salt or NaCl, sodium chloride, so which is used to reduce the freezing point of the water. मैंने अभी बोला था, तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं हम कार रेडिएटर्स में. नहीं तो टेबल सॉल्ट को NaCl को भी ऐड कर सकते हैं हम. तो NaCl को ऐड करने के बाद तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होता, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. इसी वजह से वाटर आइस नहीं होता. आइस नहीं हुए तो हिल एरियाज में हम रोड बन सकते हैं, रोड कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स, टू क्लियर द रोड्स इन द हिल एरियाज, so generally the NaCl is dropped so that the water freezing point is reduces, so which does not become easily ice, so that the roads will be cleared in the hill areas, in the Himalayas or in the northeast borders. So generally the Kf value for the water is 1.86 kelvins kilograms per mole. तो वाटर का हम Kf वैल्यू को कंपेयर करें तो इसका वैल्यू 1.86 केल्विन्स किलोग्राम्स पर मोल है. तो इसका मीनिंग क्या है कि इफ़ यू ऐड 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, देन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 1.86 केल्विन्स. तो वाटर हम 1 किलो, एक पैकेट में 1 किलो वाटर लेना है, तो 1 किलो वाटर ऐड करें तो टेम्परेचर 1.86 केल्विन्स कम हो जाता है. सो देयरफॉर द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर. वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री से 1.86 कम होता है, दैट इज इट बिकम्स -1.86 डिग्री सेल्सियस. नहीं तो 273 केल्विन से 271.14 केल्विन तक कम हो जाता है. सो देयरफॉर इफ वी ऐड 1 किलोग्राम्स 1000 ग्राम्स, देन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 1.86 केल्विन्स पर किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम सोल्यूट को ऐड करें तो वाटर का टेम्परेचर -1.86 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, दैट इज 1.86 केल्विन्स kilograms per mole. So therefore these are all the properties, the applications we commonly use in our daily life, especially in the hill areas, that is Himalayas in the northeast borders, so which use the depression in freezing point as a common phenomena to reduce the freezing point of the water, the freezing temperature of the water,
so that the water does not becomes ice, so that it is used as for the construction of the roads, to clear the roads, and to use it in the radiators, car radiators, to reduce the temperature. Thank you.